So I have to do the same. He's so in a hurry to start. I don't blame you. We have 15 minutes for this interview. Only 15. Yeah, it's Unlimited. written. It was supposed to finish at इनको कहा 11:30. गया है कि 50 मिनट है इस इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे हो नहीं, राइट? They want more. They want more. 2 hours. 2 घंटे इनफ है. लंच का भी त्याग कर रहे हैं, पिकनिक भी नहीं चाहिए. So this is how the voice of the people are heard, right? We want this. जनों का जो पब्लिक का, जनता का जो वॉइस होता है हमेशा वो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है. तो आप लोगों की जनता की वॉइस हो. Okay, so you tell me when to stop then, okay? तो आप बताना हमको कब स्टॉप करें, बंद करें. So this is a very special honor for me. It's a privilege for me to be in conversation with Raju Bhai. मेरे लिए भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है, शान की बात है कि राजू भाई के साथ मुझे वार्तालाप में रहने का अवसर मिला है. I met Raju Bhai in 1976. And of course, in those days and even now, we grew up having a very spiritual but a very deep connection to Madhuban Niwasis. मैं 1976 में राजू भाई से परिचित हुई और उन दिनों से लेकर के अब तक राजू भाई के साथ बहुत ही और अन्य मधुबन निवासियों के साथ भी बहुत गहरी स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी कनेक्शन रहा है हमारा. So I'm not sure whether it was the influence of Dadi and Didi and Dadi Janki and Dadi Gulzar, or whether it was the influence of my own Laukik parents, but we were taught to really respect and love them. And it was very easy because they loved and respect us. शायद वो दादी और दीदी और सभी तरह के दादियों का होगा, या तो हमारे लौकिक परिवार में भी हमारे जो पेरेंट्स थे उनका प्रभाव होगा, लेकिन हमारे रग रग में ये भरा हुआ था कि उनको कैसे रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें. And so my relationship with Raju Bhai is one because of many reasons, getting the photocopying done, and he always gives us a first preference. हाँ, राजू भाई के साथ का परिचय तो मुरली के आधार से, फोटोकॉपी के आधार से, पहले हमको कॉपी देते थे कोई भी चीज आती थी तो. Or allowing us to use that first typewriter that Baba got. जो इनको फर्स्ट टाइपराइटर मिला था, हमको पहले अवसर दिया राजू भाई ने कि आप यूज करो इनको. And I was one of the instruments that actually typed up the first Sakar Murlis that became the Sakar Murlis books. मैं पहले वो चांस मिला मुझे साकार मुरलियों को टाइप करने का, जिसमें से फिर साकार मुरलियों की फिर बुक्स बनी. And that was when I realized Raju Bhai's role in this whole thing of Murlis. तभी मुझे पता चला राजू भाई का कितना श्रेष्ठ पार्ट है मुरलियों के साथ का. And so we have what's called a Murli department. तो मधुबन में आप लोग जानते हैं मुरली डिपार्टमेंट है बहुत बड़ी. How many of you know where the Murli department is in? किसको पता है कहाँ है मुरली डिपार्टमेंट मधुबन में? How many of you visited the Murli department? कौन गए हुए हैं वहाँ मुरली डिपार्टमेंट में? So you visited the Murli department in Shantivan? शांतिवन में गए हैं या मधुबन पांडव भवन में गए हैं?
Where is it? कहाँ है पता है? कौन बताएगा कहाँ है? The Murli department. पहले झोपड़ी के पास था, अभी लिटरेचर के ऊपर है. Before, He's telling you. before it was like Baba's hut, near Baba's hut, but now it is on top of the literature. As soon as you enter the gates, that little building, you have to go up the stairs. That's the Murli department. And how many? Above the bookshop. And how many of you know where the Murli vault is? There's a vault in Panda Bhavan with Murlis. Where is that? ये बहुत बड़ा जैसे लॉकर होता है ना मुरलियों की, वो वॉल्ट बना हुआ है, वो कहाँ है? किसी को पता है मुरलियों का वॉल्ट कहाँ है? कुंज भवन में. कुंज इनको नहीं मालूम है. He's helping us. इनको पता नहीं है ना, कोई ने नहीं देखा. कुंज भवन. I saw it. I went in. So you have to make friends with the Pandav Bhavan Nivasi to get into that vault. जो पांडव भवन निवासी हैं उनके साथ दोस्ती करेंगे तो पता चलेगा इन सब बातों का. वॉल्ट कहाँ है? And he is not Raju Bhai. And that is not. अच्छा, वो राजू भाई नहीं है, मतलब उनके. Okay, so you have to find out. That's the secret you have to find out. But Raju Bhai, yeah, but he won't even look at you. जमुना प्रसाद भाई जो आपको देखेगा भी नहीं, उनसे He doesn't look परिचित at करें. anybody. So Raju Bhai, today we'll talk about Baba's Murlis. Because when the double foreigners came to Baba, and most of us came in 74 and 75, we then became connected to Abhyakt Bapdada, and we started listening. He started talking to us through the Abhyakt Murlis. आज हम मुरलियों के बारे में वार्तालाप करेंगे, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि डबल फॉरेनर्स 74 के बाद आए हैं और हमारा बाबा के साथ का मेन कनेक्शन अव्यक्त बाप दादा का मिलन रहा है. And so, but Didi ji, she was very specific in which she used to tell us the importance of Sakar Murlis. तो हम हमेशा अव्यक्त मुरलियों को ज़्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन जब दीदी थी तो हमेशा साकार मुरलियों के ऊपर जोर देती थी. Now, I have a lot of questions to ask you, so please don't take the whole hour to answer one question. बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक एक प्रश्न का 1 घंटा नहीं लगाना आंसर देने में. Right? So my first question, so you're going to go snap, 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 right? So my first question is, why was it important for Didi to make us understand and connect to Sakar Murlis, the importance of Sakar Murlis? What's so important about Sakar Murlis? तो आपको क्या लगता है कि दीदी को इतना महत्व क्यों था और हम लोगों के अंदर भी इतना महत्व दिलाने का दीदी का मतलब क्या था साकार मुरलियों में? 21 जनवरी 69 को जब बाप दादा की अव्यक्त बाबा की प्रवेशता गुलजार दादी के तन में हुई, तब बाबा ने कहा कि साकार बाबा की मुरली ही मुरली है. बाकी संदेशी के द्वारा जो बाबा का पाठ चलेगा वो बच्चों को बहलाने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चलेगा. इसलिए जो भी साकार बाबा ने मुरलियां चलाई हैं उनको ही रिवाइज करना है. So on the 21st January 1969, when first time Avyakt Bap Dada came and spoke, and he said that the real Murli is the Murlis that have been spoken in the Sakar form, the Sakar Murlis. The reason why Baba is coming now in Avyakt form, Avyakt meeting, Avyakt Murli, is to entertain the children.
तो बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया था कि जब पेपर का समय होता है तो पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। तो साकार बाबा ने के द्वारा जो शिव बाबा ने पढ़ाया वही पढ़ाई है और उसको ही तुम्हें रिवाइज करना है। Baba had reminded us that when it is the time of a test paper examination, you always have to revise your lessons. And so Baba reminded us that the real lessons are in the Sakar Murli. कभी मैं अव्यक्त बाबा की मुरली से अगर प्रश्न उत्तर टाइप करता था तो दीदी कहती नहीं, साकार मुरली ही मुरली है, इसको टाइप करो, उसी से प्रश्न बनाओ। Sometimes I used to do question answer based on Avyakt Murli, and Didi used to say, no, not on Avyakt Murli, but the question answer also should be on Sakar Murlis. क्योंकि साकार में बाबा ने पूरे सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कवर किया है। Because in the Sakar Murlis, Baba has covered all the subjects very thoroughly. अव्यक्त बाबा ने आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण आत्मा पढ़ा रही है और उस पढ़ाई को समझना, हजम करना, उसमें बहुत शक्ति चाहिए। और साकार बाबा की मुरली अगर समझ गए तो अब ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ और शिव बाबा की पढ़ाई, ज्ञान, उसके आधार से हम बहुत आगे उन्नति कर सकते हैं। तो दीदी जी का लक्ष्य था कि सबका प्यार वैसे साकार मुरली से होना चाहिए। So Shiv Baba, when he came through Avyakt Babdada, it was really to make us perfect, and it was done through the perfect form. So it is not so easy to learn through the perfect form what he spoke. It takes a lot of power. And therefore, the importance now is still to pay attention to the Sakar Murlis, the original lessons from the Sakar Murlis. And so, Rajubai, in the Sakar Murlis, you're hearing two voices, right? One is Shiv Baba giving what he calls his Shrimat, and the other is the Purusharthi Brahma taking that Shrimat and making sense and meaning at a human level. So in the Sakar Murli, you have two voices. One is the voice, sorry, I'm thinking to myself. शिव बाबा जब बोलते हैं, मुरली साकार मुरलियों में दोनों की वॉइस होती है, शिव बाबा के श्रीमत ओरिजिनल और ब्रह्मा बाबा के अपने पुरुषार्थ के अनुभव से सुनाई हुई। तो दो वॉइसेस होते हैं हमेशा उनके। तो उनमें से अब प्रश्न है। Well, I wanted you to talk about these two voices, the voice of Shrimat and the voice of the Purusharthi in the Sakar Murlis. तो शिव बाबा की श्रीमत का जो वाणी वॉइस है और पुरुषार्थी के रूप में ब्रह्मा बाबा की जो वॉइस है, उनकी जो महावाक्य है, वो दोनों के बारे में अलग अलग रूप से आप बताना जरा हमको। वास्तव में वॉइस तो अव्यक्त बाबा में भी दो की ही है, दोनों की है, ब्रह्मा बाबा की भी है, शिव बाबा की भी है, लेकिन वो ऐसा कंबाइंड है जो हम उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समान बन गया। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करके जब शिव बाबा के बिल्कुल समान बन गया तो अव्यक्त होकर के कंबाइंड हो गया। लेकिन बोल दो। So in Avyakt Murlis also you have the two voices, but they are combined because Brahma Baba himself has become perfect. So the voice of the perfect one, the Afet Maker, has become the perfect one, and voice of Shiv Baba, they both have been combined into one in the Avyakt Murlis. साकार बाबा में जो साकार मुरलियां हैं वो ब्रह्मा बाबा के भक्ति काल के अनुभव भी उसमें हैं, और साथ साथ जब शिव बाबा कोई बात कह रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा उस पर बहुत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, 2 बजे उठ करके विचार करते हैं कि बच्चे इसको पालन कर सकेंगे या नहीं, मैं करके देखूं फिर बच्चों को कहूं। तो इस तरह से दोनों के महावाक्य अंतर स्पष्ट समझ में आता है कि शिव बाबा बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। So in the Sakar Murlis, so there's two kinds of experiences that you will hear from Brahma Baba.
One is the experience from his devotional background, what he has himself experienced. And the other is what Shiv Baba is telling us to do now. And Baba himself would try that, make effort based on that. And based on that experience would share in the Murli. So you will find both these two types of sharing from Brahma Baba in Sakar Murlis. दूसरी बात है कि जो बच्चे आते थे, प्रवृत्ति से आ रहे हैं, बिजनेस से हैं, तो वो जब प्रश्न करते थे तो शिव बाबा कहता इस विषय में मैं नहीं जानता, ये ब्रह्मा बाबा बताएगा। तो ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार से बिजनेस के लिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत सारी बातें मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा केवल आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। 4 सब्जेक्ट पढ़ाई है शिव बाबा ने, लेकिन मूल लक्ष्य मुरली का आत्मा को पतित से पावन कैसे बनाया जाए। दूसरा कोई भी प्रश्न किसी ने पूछा तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। So the other thing is that in the days of Brahma Baba, Sakar Brahma Baba, people used to come from their household background and they would have many questions of many kinds. And so it was Brahma Baba who would be able to share based on his experience of household or business or whatever. What Shiv Baba comes and gives is the original knowledge for the soul to become pure. So when they would approach him with any kind of other questions, Shiv Baba would say no. The Shiv Baba just gives knowledge for the soul to become pure. And the other experiential knowledge will come from Brahma Baba. तीसरी बात थी कि जो सेवा में, स्थापना में विघ्न आ रहे थे, लोग रुकावट डालते थे, नया ज्ञान, नई धारणाएं, तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का बहुत विरोध होता था। तो विरोध का सामना ब्रह्मा बाबा ने किया, इसलिए उनको कैसे समझाना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सारी समझ, संसार के समाचार सुनना, उस अनुसार राय देना, वो ब्रह्मा बाबा था। इसलिए ब्रह्मा बाबा की मत भी बहुत मशहूर है। शिव बाबा की श्रीमत तो है, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये नहीं मानेगा, माना वो श्रीमत, ब्रह्मा की भी मत श्रेष्ठ मत है। The other thing is that Shiv Baba, because the knowledge that was shared by Shiv Baba was so new and so different from the rest of the world, there would be a lot of opposition, many situations where Brahma Baba would have to face those opposition and he would have to share those kind of experiences also. And that will then become Brahma's mat, the directions from Brahma Baba based on his experience. And that's why there is great praise for Brahma's mat also, that even if Brahma descends, his directions we will follow or we will not follow. There is a lot of importance to Brahma's mat or direction also. चौथी बात बाबा कई बार कहते हैं कि अगर ब्रह्मा की बात कोई गलत भी हो गई तो जवाबदार शिव बाबा है। मान लो आपको राय दिया, आपने मान लिया और नुकसान हो गया, तो भी उसको संभालेगा शिव बाबा, क्योंकि उनका रथ है। And the next thing is that, oftentimes Baba says, even if Brahma's direction sometimes becomes wrong, it's never wrong as such, but wrong result happens because of his direction. But Shiv Baba takes the responsibility for that he will make everything right because he is the instrument for Shiv Baba's direction. So let's take that last one. Baba said this yajna is the Rudra Gyan yajna. He made that very clear. He didn't say it was the Rudra Yoga yajna, or he didn't say it was the Rudra Dharna yajna or the Rudra Seva yajna, but he said it was the Rudra Gyan yajna. So in the Sakar Murlis, Brahma Baba was experimenting in the laboratory, the lab of his life, on this Gyan that Shiv Baba was revealing. So बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा आए हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने, रुद्र योग यज्ञ रचने या धारणा यज्ञ सेवा यज्ञ नहीं कहते हैं। तो हमेशा देखा जाता है कि ज्ञान का इम्पोर्टेंस रहा है
और ब्रह्मा बाबा उसी ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में रिसर्च करते थे, प्रयोग करते थे, जैसे कि सारा जीवन उनका प्रयोगशाला के रूप में था। What is it in the Sakar Murli? Because whatever worked for Brahma will work for Brahmins, right? The same principle. So what was it in the Sakar Murli that Brahma Baba paid attention to that guaranteed his mistakes being corrected by Shiv Baba? तो जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा कोई गलती भी हो जाती थी तो शिव बाबा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे, तो ऐसी कौन सी अटेंशन ब्रह्मा बाबा की रही मुरलियों के ऊपर कि जिसको समझने से, धारण करने से शिव बाबा ने इतना उनका जिम्मेवारी लिया कि ये ठीक है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के नंबर 1 बच्चे, एक ही बच्चा। बाबा कहता मुरबी बच्चा मेरा एक ही है, जो मुरब्बी होता है, जो बहुत स्नेही होता है, क्योंकि इतनी सब ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा के द्वारा की है। तो ब्रह्मा पिता है, ब्रह्मा वैसे हम कहते हैं हमारा बड़ा भाई है, लेकिन वास्तव में शिव बाबा कहता मैं ग्रैंडफादर हूँ, ब्रह्मा तुम्हारा फादर है। और फादर जो शिव बाबा का इतना लाडला बच्चा है, नेक्स्ट टू गॉड कह करके भक्ति में उसको पूजा है, श्री कृष्ण के रूप में। So Brahma Baba, always Shiv Baba calls him as Burabbi Bacha, the first number, most beloved, sweet pet child. And so he is the one that takes that lead role in following. And what he can do, then we can also do. But he gives special attention and love to and position to Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा से गलती नहीं हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने मान लो आपको कोई राय दिया और उस राय के अनुसार आपको कुछ नुकसान हो गया, बाबा की जवाबदारी तो बाबा ने अपनी तरफ से राय बहुत अच्छी दी, लेकिन आपने कुछ गलती की, कुछ कर लिया और नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की संभाल से बाबा करेगा। राय गलत नहीं दी ब्रह्मा ने, उसने तो ठीक राय दिया, लेकिन आपके कारण कोई गलत हो गया, ब्रह्मा के कहने से आपने किया और नुकसान हो गया आपको, तो बाबा कहता मैं जवाबदार हूँ। So it never happens that Brahma Baba himself would give you wrong direction. What he spoke and how he directed was always the right thing from Shiv Baba. But sometimes it can happen that in the way that you apply that direction, or because of what you did or did not do, the result of that could be in a negative way or a wrong way. And that is what Shiv Baba takes responsibility for, to correct. जैसे बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है तो बाप कहता है कोई बात नहीं, ये गलती मेरी गलती है कि मैंने तुमको समझाया नहीं, ठीक राय नहीं दे पाया। Always when father and child are there and something happens about the child that it happens, not in the right way, the father will take responsibility. Yes, I did not give you right direction and therefore this happened. So it is like that because Brahma Baba is the first beloved child of Shiv Baba. So therefore, and listen to this very carefully, because also I want to invite you to write your questions, to ask him, because I'm going to open up the floor based on Sakar Murlis. Srimat is always accurate. Shiv Baba asked his first son, Brahma, to be the example of the Srimat. If one follows that Srimat, brother, this is a question now. If one follows that Srimat, but the consequence in the mix of the karmic field isn't what you expect it to be, because you follow the Srimat, Baba will take care of it. Is that what you're explaining to us? तो क्या ये भी सच है ब्रह्मा के लिए जो आपने कहा कि उनका कुछ गलती नहीं हुई, उन्होंने जिम्मेदारी ली, क्या हमारे साथ भी यही हो सकता है कि हमको पता है कि श्रीमत एक शिव बाबा का है और हम समझते हैं हम श्रीमत पर चल रहे हैं,
तो क्या ये भी सच है कि हमारी भी जो अगर कुछ गलत उसका नतीजा निकला तो बाबा हमारी भी जिम्मेवारी लेगा? जरूर लेगा, क्योंकि अगर हमने श्रीमत अनुसार किया है और श्रीमत के कुछ कारण से, कोई कारण जो कार्मिक हिसाब किताब बताया, तो कभी कुछ नुकसान भी हो सकता है। मानो बाबा ने जो श्रीमत दी, हमने उसको यथार्थ समझा, उसको उसी अनुसार पालन किया, हो सकता है कभी उसको समझने में अंतर पड़ गया हो। हर एक की समझ अपनी होती है। जैसे मिसाल बताता हूँ, So it's possible that Shiv Baba has given us Srimad and we have also understood the Srimad to the extent that we think it is right, you know. But then there are these other karmic equations or, you know, factors that are involved. So it is possible that something like that happened, but I want to explain. कई बार हम समझते हैं अपनी समझ, अपने अनुभव के आधार से ये बात राइट है, और शिव बाबा की श्रीमत बोल रही है कि नहीं, ये राइट नहीं है। हम उसी अनुसार अपने अनुभव को उसमें मिक्स कर रहे हैं। श्रीमत भी मिल रही है और अनुभव उसमें मिक्स हो रहा है, उसके कारण नुकसान हो रहा है। हमारा अपना जो मैं है वो नुकसान करा रहा। मैं अनुभवी हूँ, मैं भी तो जानता हूँ इसका परिणाम गलत होगा, ये ठीक नहीं है। बाबा तो कह रहा है वो तो निराकार है, उसका तो ये साकार का पता ही नहीं है। कई बार अपनी मत को हम श्रीमत में मिक्स कर लेते हैं, उसके कारण नुकसान होता है। So it is true. बंद हो गया? So it's true that Srimad is never wrong, it's always right. But then sometimes what happens is we mix our experiences of what Baba is saying or related to that subject, and we mix the Srimad with our knowledge of our own experience. And it's because of this mixture that you get the wrong result. So it's not because Srimad is wrong, but it's because of what I mix with the Srimad that it doesn't produce the same result. एक बात और कहना है, बाबा की श्रीमत सबको एक जैसी मिली है। जैसे अंतिम जन्म है, सबको पवित्र जीवन जीनी है, पवित्र रहना है। अब जैसे हमारे जैसा कुमार, हम समझते हैं हमारे माता पिता अकेले हैं, उनको संभालने के लिए कोई तो चाहिए। और मैं बाबा से अगर राय लूं कि बाबा मैं अकेला हूं, मेरे माता पिता का बहुत फोर्स है, मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे शायद शादी करनी पड़ेगी, तो ब्रह्मा बाबा कभी उस बात को काटेगा नहीं। हाँ हाँ बच्चे भले करो, ये नहीं कहेगा नहीं करो। जानता है कि शादी बर्बादी है, करेगा तो ये गटर में गिरेगा, जानता है, लेकिन पूछ रहा है, माना उसके पास हिम्मत नहीं है, उस बात को, श्रीमत को पालन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। नहीं तो सामना करे, वो पूछ करके गलती करेगा तो डबल पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता भले करो। So there is another point I want to clarify, and one is Baba's direction is always about purity, how to make the soul pure. So he will give directions for purity, to remain pure. For example, in my life or any Kumar's life, the direction for marriage or no marriage, living a pure life, you can go and ask Baba about, and Baba will always say, yes, live a pure life. But then there are other situations, like parents may be telling that son or daughter that no, that you have to get married or whatever. And in that situation, Baba understands this whole situation. He says, Srimad is this, but the people are telling him, the family is telling them that. But the fact that he is coming and asking the question means that he has the courage to follow through with the direction that Baba would give also. And therefore, when you especially go and ask Baba something and he gives you an answer for it, and then you go against it, the repercussion of that is always more than if you didn't ask.
and you did your own thing. Now, you had a very close relationship with DDG. And DDG was very particular. She was very clean. Her intellect was the cleanest intellect I have seen of everyone. How did she, from your experience, separated her experiences from Srimad? Because when it came to the yajna, Didi always followed the Srimad, never an experience of something. This is what Baba says, this is what you do, because Baba said this. How did she do that? What was that specialty that always made her follow Srimad without the experiences, which is a form of manmat getting mixed? तो आपका दीदी के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है, तो और दीदी की बुद्धि बहुत स्वच्छ थी, साफ थी, कभी भी मिक्स नहीं करती थी। तो दीदी का ये जो धारणा है, जो श्रीमत को बिल्कुल कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं करती थी, अपने अनुभव के साथ मिक्स नहीं करती थी। जैसे बाबा ने कहा, उस दीदी का श्रीमत भी ऐसे, मतलब मत भी ऐसे ही था। तो उनमें क्या विशेषता थी, क्या फॉलो किया कि दीदी ने ऐसा मतलब सबूत दिया, जैसे कि उसको मिक्सचर नहीं होने दिया कभी भी? उसका कारण था दीदी का बाबा से बहुत जिगरी प्यार था। प्यार में जैसे कुर्बानी होती है, मम्मा ने भी बाबा की बात को उसी तरह से लिया। बाबा ने अगर दिन में कह दिया बच्ची रात है, तो मम्मा ने कभी नहीं कहा बाबा दिन है। लोग समझेंगे अंधश्रद्धा है, लेकिन बाबा कह रहा उसके पीछे कुछ राज है। तो मम्मा ने उस राज को समझने के कारण कभी बाबा की बात को कट नहीं किया। ऐसे ही दीदी उनको कदम कदम पर फॉलो किया कि ब्रह्मा का कहना माना होना ही है, राइट है, उसमें मुझे अपने मिक्स नहीं करना। तो एक बहुत प्यार और दूसरा अटूट निश्चय, उसके कारण उन्होंने अपनी बुद्धि उसमें चलाई नहीं। बाबा ने कहा हो जाएगा। One was very, very deep love for Baba from Didi's side, and also unbreakable faith. And Didi's faith was such, and Mama's love was also such, that when Baba said anything, even if it was bright daylight and Baba would say it's night, she would say yes, because she would understand that there is a secret or the significance behind what Baba is saying or doing. And she would never ask, question, argue. And Didi had the same quality of deep, deep love and unbreakable faith in what Baba is saying. There is a significance, and so what Baba says is right. दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अगर हम यज्ञ में 50 भाई बहनें हैं और दीदी ने रखा है हम लोगों को, उसमें अगर कोई भी एक भी श्रीमत अनुसार नहीं चल रहा है, तो दीदी इतनी लॉफुल थी, लॉ तो था, डायरेक्ट कह देती थी कि अगर तुम नहीं चल सकते हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, बाहर जा सकते हो। इस बाउंड्री के अंदर अगर रहना है तो ये नियम पालन करना है, और नहीं तो दुनिया पड़ी है, जाओ शादी करो, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो, लेकिन यहाँ पर रहना तो ये नियम पालन करना है। And the other speciality of Didi was she was very, you can call it strict, but also lawful. She was absolutely lawful. She was loveful, but she was also very lawful. And for example, if someone had the situation where they could not be, follow the disciplines of the yajna while staying in the yajna, she would always tell them, the doors are open, you can go and you can live the way you want to live, but if you're living here, this is the discipline. So in this way, she was very clear about what one should and shouldn't do. And so, the Sakamurli was the foundation of Didi's love, of Didi's law, and of the yajna, right? Everyone in this room and outside of this room who belong to the BK family think that they are a protector. Each one is a protector of the yajna. What would you
say to each one here that the Sakar Murli would support in them being a protector of the yajna. If they connect to the Sakar Murli, how will this flame keep burning bright? तो आप समझते हैं कि साकार मुरली जो है बाबा के प्यार का सबूत है, बाबा के शक्ति का भी सबूत है, डिसिप्लिन का भी, लॉ का भी सबूत है, और मेन थिंग यज्ञ से जो स्नेह है उसके लिए भी सबूत है। जो हम सभी जो बैठे हैं यज्ञ के स्नेह से, बाबा के स्नेह से बैठे हैं और यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि साकार मुरलियों में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम यज्ञ की रक्षक बन सकते हैं? साकार बाबा ने कोई बात गोलमोल करके नहीं सुनाई है, डायरेक्ट सुनाया है। और वो डायरेक्ट महावाक्य हर एक को हजम नहीं होते, मतलब बहुत कड़े शब्दों में शिक्षाएं दी हैं। और वो शिक्षाएं अगर उसी ढंग से अभी लिख देते हैं, लिखी जाती, दादी कहती थी थोड़ा सा संभल के लिखो। बाबा ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, इसलिए दादी जी हमें खास गाइड करती थी। जैसे मिसाल बताता हूँ, एक मिनट बता दें। Baba has spoken so many things to clarify, certain disciplines and things of knowledge. And sometimes he has said it in very harsh words. Never went around doing, anything, but he always said it straight. And sometimes it comes out in harsh words. But of course, it's not always easy to digest those harsh words. And therefore, sometimes it may have been a little bit of what you call edit. And so Dadi has taught me something like that. She would tell me that you have to be careful how the words are written. क्योंकि बाबा तो अपने छोटे से परिवार के सामने, अगर कोई बच्चे ने गलती की, बाबा के सामने आया, तो बाबा कह देगा ये तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता, डॉग का बच्चा डॉग, गॉड का बच्चा बना ही नहीं है। अब सीधे शब्द अगर अभी लिख दिए जाएं तो लोगों को समझ नहीं आएगा, भगवान भी ऐसे बोल सकता है क्या? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के आगे कुछ शब्द ऐसे बोले, जैसे बाबा कई बार कहते हैं धोबी होता है, वो गधे को नहलाता है, धुलाता है, कपड़े रखता है, लेकिन गधे की आदत होती है मिट्टी देख करके वो लेट जाता है। तो मेरे बच्चे भी अभी तक गधे जैसे हैं। बाबा इतना समझाता है, इतना प्यार करता है, नहलाता धुलाता है, और सब जाते हैं देवमान की मिट्टी में लेट जाते हैं। तो बाबा के ऐसे शब्द जो थे उससे लोगों को परिवर्तन होने में बड़ी मदद मिलती थी। लेकिन अभी जो है बच्चे जो नए नए आ रहे हैं वो कहेंगे भगवान भी ऐसी भाषा बोल सकता है क्या? So sometimes, for example, Baba would use this word in the Murli, that, if somebody did something wrong, a mistake, he would say it's like a child of a dog will be like a dog, and so it would be very harsh words. Sometimes Baba would say, yes, if you are a laundroman and you have a donkey to carry the laundry, and you decorate the donkey very well, the donkey to carry the laundry, but if you decorate the donkey very well and leave him to do the work, he still would go and, roll around in the dust and make himself dirty. So such examples and language that Baba would use, I don't think those who are coming new at this time, they would be able to take it. But in the olden days, it was Baba and Baba's most beloved children. And you would actually be touched by Baba's examples and words like that. And so Baba used it in those times in front of those children. It may not apply to this time and to the children that are coming now. ये शब्द शिव बाबा यूज नहीं करता। ब्रह्मा बाबा बच्चों के बीच में बच्चों के लिए कहता था। अब बच्चे की बजाय अभी इतना बड़ा परिवार हो गया, उस परिवार में हर एक को समझने की अपनी अपनी समझ, निश्चय, इसलिए उस शब्दों को हम अभी थोड़ा एडिट करना पड़ता है। So these were not the words of Shiv Baba, but it was the words from Brahma Baba, from his own experience and language that he was using. And therefore, these days, because understanding these factors,
we have to edit some of these words. अभी नहीं कर रहे हैं, शुरू में दादी ने ही करवा दिया था. It's not that we are doing any more editing now, but in the beginning, when it started to be going out to so many children, not just a small family, but worldwide, Yagya children. And that time, Dadi made us edit, take out some of those words. Okay, so I have many more questions for Raju Bhai, but I want to open it up to you now. Do you want to ask him anything? Because I know that there is a bias toward the Abhyakt Murlis from many of us, not from me, from many of you. But, and I know some of you really like the Sakar Murlis. Do you have any questions for Raju Bhai to clarify your understanding of the Sakar Murlis? Because the Sakar Murlis is what the Yagya is. It's the Rudra Gyan Yagya, and that's the Sakar Murlis. So if I'm a flame of the Yagya and I don't understand the Sakar Murlis, how could I be a flame of the Yagya? So here's your chance. Do you have any questions? तो आप सबको भी अभी चांस है, ये कोई भी अभी अंदर में प्रश्न रहा हुआ हो इस मुरलियों के बारे में, मुरली में जो बातें आती है, यज्ञ के बारे में कुछ भी बातें ऐसी है जो आप समझ नहीं सकते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ की एक जैसे कि ज्वाला है, और अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकेंगे. So if you speak Hindi, ask your question in Hindi, so Raju Bhai could understand it in Hindi, and then Kalaban will translate it in English. Which language you want, Hindi or English? Hindi. I just Hindi. said, if you speak Hindi, please ask the question in Hindi. मैं बीके लोहार से मुरली पढ़ता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश की. अंग्रेजी के अंदर कई वर्ड्स होते हैं जो आइटैलिक में होते हैं, वो चेंज हो जाता है, तो क्या रीज़न है उनको चेंज करने का? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगे मुरली में कि ये शिव बाबा के वर्ड्स हैं या ये ब्रह्मा बाबा के वर्ड्स हैं? Okay, say it in English now. When I read the murlis, I read from in English and Hindi both from B.K. Lohar. And in English, there are many words which are in italics. And why they are put in italics? And some of the words Baba uses in Hindi are the English words. Why he uses the English words? And the next is, how do I recognize which words are from Shiv Baba and which are from Brahma Baba? सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदी और इंग्लिश मुरली को जहाँ तक हो सकता है सेम रखने का हम प्रयास करते हैं. इंग्लिश मुरली लंदन में ट्रांसलेशन होती है. भारत में जब हम कर रहे थे तो विदेशियों ने कहा कि भारत की इंग्लिश को हमारे विदेशी नहीं समझ पाते, और खास करके हमारे दादा आनंद किशोर जी बहुत पढ़े लिखे थे और उनकी इतनी हाई इंग्लिश थी जो भारत के ऑफिसर्स भी उसको समझ नहीं पाते थे. So as far as possible, wherever in the world, we try to keep the Hindi and the English same, similar, language-wise, understanding-wise. In the beginning, Murlis used to be translated in Bharat, in India. Dada Anand Kishore, who used to translate, he was very well educated, and he used to use some words that even those outside in England, etc., they could not understand. So this was their response, that we cannot understand translations done in India. इसलिए दादी जानकी जी ने विशेष पहले मंदा बहन को निमित्त बनाया ट्रांसलेशन के, और उसके बाद जसू बहन ने डिपार्टमेंट अपने हाथ में ली, और वो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करती है. और अगर कोई उसको शब्द लगता है कि ये विदेशी लोग नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन जयंती बहन से राय करके करती है. मुझे इंग्लिश के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन लक्ष्य यही होता है कि सेम ट्रांसलेशन हो,
फिर भी अगर विदेश के हिसाब से कोई भाषा में समझ में ना आता हो तो जसू बहन जयंती बहन से राय करके उसमें चेंज करती है. So it was in Dadi Janki's days that Dadi Janki had Mandapan as the one who is overseeing the whole of the translation into English. After Mandapan, it's now Jasuben. She is the one, and we always try and make it accurate as possible. But sometimes it's possible that one may think that they will not understand this word or will not, be the right translation for most people. And then she consults with Jayantiben and then uses whatever word comes up. So, and italic, no? Just clarify that. इनका ये भी था ना, italic में जो आता है वो बाबा ने इंग्लिश शब्द यूज किए, तो बाबा ने इंग्लिश शब्द क्यों यूज किए? बाबा के लिए भी बोलेंगे क्यों यूज किए. बाबा तो फारसी भी बोला है, उर्दू भी बोला है, सिंधी भी बोला है, क्योंकि जैसे बच्चे सामने बैठे हैं तो बच्चों के लिए वही भाषा बाबा ने बोल दी. तो ऐसा थोड़ी है कि बाबा ने क्यों बोला है. बाबा के सामने कोई अंग्रेज बच्चा आ गया, कोई ऐसी इंग्लिश जानने वाला मद्रासी आ गया, तो बाबा ने उसमें इंग्लिश शब्द यूज कर लिया. कोई सिंधी बैठे हैं तो सिंधी शब्द यूज कर लिया. तो इसमें क्यों शब्द का प्रश्न उठना तो. So Baba has used many languages, and as other children in front, as their language, Baba would use that language too. So it's not a question of why Baba used English language. It's a good thing, no? He used English language. दूसरी बात है जो भाई ने कहा, एक तो डॉक्टर लुहार ने अपनी मत से अपनी वेबसाइट बनाई है, वो श्रीमत अनुसार नहीं है. अगर आपको मुरलियों की अच्छी स्टडी करनी है तो हमारी brahmakumaji.org ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल मुरली है. brahmakumaji.org जो लंदन से सभी लैंग्वेज में मिलती है, पढ़ने को, लिखने को, सुनने को, सब. दूसरी बात ये है जो भाई ने कहा, ब्रह्मा की मत और शिव बाबा की मत अंतर कैसे किया जाए. मैं समझता हूँ शायद इन्होंने डायरेक्ट मुरली सुनना शुरू किया है. कोई अच्छी टीचर के साथ बैठ करके पहले मुरली क्या है उसको यथार्थ समझने की जरूरत है. शिव बाबा ज्ञान का सागर है, बहुत सारी ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाते हैं. ब्रह्मा बाबा कभी कभी अनुभव सुनाते हैं, और अनुभव के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की बात को अंडरलाइन कर देते, रिपीट कर देते हैं, और कहते हैं बच्चे अंतर क्यों करते हो, ये समझो शिव बाबा ही पढ़ा रहा है. दो बातें हैं. ब्रह्मा बाबा के अनुभव आप अलग कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई को आप अलग नहीं कर सकते हो. शिव बाबा भी पढ़ा रहा है, और शिव बाबा की पढ़ाई को ब्रह्मा ने मनन करके भी पढ़ाया है. इसलिए दोनों को अंतर करने की जरूरत नहीं है. जहाँ अनुभव आता है वहाँ ठीक है, ब्रह्मा बाबा कर रहा है. बाकी पढ़ाई तो ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई है, शिव बाबा ने, वो दोनों की सेम है. So you cannot differentiate really the study that they are both teaching, Shiv Baba and Brahma Baba. Yes, of course, Shiv Baba gives the original knowledge, Brahma Baba shares the experience, but study for us is the same. So you don't even have to think about who is teaching this and who is telling this and all of that. It's the study from both of them, Shiv Baba and Brahma Baba. And even before, he said Dr. Lohar's site was developed out of his own interest. It was not based on Srimad, but the official website of the Brahma Kumaris is brahmakumaris.org, and you'll go for the Murlis. There you will get the accurate Murlis of everything. So just to be careful. And also before just picking up any Murli or listening to any Murli from anywhere, you must sit with a teacher who can explain to you what a Murli is, the significance of Murli, what to look for in a Murli, and not get lost into who's saying what, who's doing that. So Anupriya and then the brother there. Kanupriya. साकार मुरलियों में अलग अलग टॉपिक्स पे बाबा एक ही मुरली में बात करते हैं, तो पुरुषार्थ के लिए और
धारणा के लिए हम कौन सा टॉपिक दीदी दादी कैसे चूज़ करते थे, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और नयों के लिए भी पुरानों के लिए भी आप अगर बताएं कि कैसे हम. Baba covers many topics in the Sakar Murlis, different subjects of making effort. And so how do we choose from those topics of, that it doesn't become too much also, but they also get what is necessary into practice. ये मुरली की स्टडी जब मैंने शुरू की थी तो दीदी ने मुझे मुरली के 4 भाग बनाने के लिए कहा. एक ही डायरी में 4 पेज अलग अलग. कोई मुरली ज्ञान की सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरह से चली है. सृष्टि चक्र का ज्ञान है, पुनर्जन्म का ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है, बार बार आत्मा का परिचय है, वो सूक्ष्म है, ड्रामा का है. तो सभी बातों पर हम रोज की मुरली पर ध्यान नहीं देते, लेकिन विशेष ज्ञान पर अगर मुरली चल रही है, प्रश्न उत्तर से पता चलता है, सार से पता चलता है. आप किसी दिन ज्ञान की पॉइंट्स को नोट करो, किसी दिन विशेष योग पर मुरली है, योग की बातें नोट करो, किसी दिन विशेष धारणाओं पर बहुत है, धारणाओं की बातें नोट करो. कभी कभी पूरी मुरली सेवा पर ही चल रही है तो सेवा की बातें नोट करो. बाबा तो सागर है, उसकी लहरें हैं, लेकिन लहरों में लहराना आना चाहिए. मनोरंजन होता है और जो बात हमें लेनी है उसमें धारणा में आ जाती है, प्रश्न उत्तर में आ जाती है, सार में आती है. तो उसमें से आप अपने लिए नोट करो कम से कम 2 बातें 3 बातें जो आज मैं सारा दिन उस पर अटेंशन रखूंगा, वो तो नोट कर सकते हैं. पूरी मुरली तो बाबा कहता नहीं नोट करो. Didi had taught me to take notes from the Murli in 4 parts: Gyan, Yoga, Dharana, Seva. And every day you will find that, Baba shares many different points of knowledge, going into the depth of knowledge. Sometimes it's more on yoga, sometimes it's more on dharana. So you can note down all those points, But in the question answer and in the dharana point, you will get the main things. And so for you, for your personal effort, what you can do is at least note down 2 or 3 things. At least not everything, but 2 or 3 things that you're going to come back to again and again during the day to think about, to actually implement, and so on and so forth. Om Shanti Bhai, Prithviraj Bhai from Edison. 2 questions है भाई. Do you speak Hindi? जी. Could you talk to him in Hindi? जी, ओके. 2 क्वेश्चंस हैं. पहला, 21 जन्म का आस्ति ज्ञान पर निर्भर है और आप उस ज्ञान मुरली का इंचार्ज हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि हम सब का आस्ति आपके हाथ पे है? लाइक वॉट एवर यू डू, लाइक जो कुछ भी आप करते हैं वो सब हमारे 21 जन्म का आस्ति बनता है. उससे आप कभी आपको नर्वस हुआ है या लाइक कैसे आप उसको समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. से 21 जन्मों की हम सबकी आस्ति माना कि इनकम हो रही है और आप मुरली से ही डील करते हो, तो आपके हाथ में हम सबका इनकम है. तो आप So the question was that we know that Gyan is the basis of the income for 21 births, inheritance income for 21 births. And you deal only with Murlis. How do you feel when you know that all of us, our future, our income is in your hands? Do you feel a little nervous sometimes? कभी भी आज तक मुझे ये नहीं लगा कि मैं सबके लिए हूँ. बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हो, वो पालना देने वाला है. उसने मुझे निमित्त बनाया. अगर मैं हट जाऊंगा तो दूसरे बैठे हैं. अगर मैंने कोई कार्य किया तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ. कराने वाला बाबा है, बच्चे उसके हैं, पालना उसको करनी है. मैं तो सिर्फ निमित्त इंस्ट्रूमेंट बना हूँ हाथ आगे करने का. बाकी मैं आपकी 21 जन्मों की जवाबदार नहीं हूँ. वो बेटा है जवाबदार. Till today I have never thought of myself like this,
I always thought Baba is the one who is giving, and he is giving to his children, and he has made me an instrument in between to do this work. If I'm not here tomorrow, somebody else will take my place, and you will still get your inheritance. So I am not the one who is holding your inheritance. Thank you, भाई. Or your income. दूसरा क्वेश्चन जगदीश भाई के बारे में. भाई जी बाबा के लिटरेचर डिपार्टमेंट बहुत कुछ दान किए हैं, और उनके बारे में आप कुछ बातें करें, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस, और उन्होंने मुरली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है क्या, उनके बारे में बोलेंगे तो अच्छा होगा. और बाबा, आई थिंक बाबा इज समवेयर कहीं बोला है कि व्यास जगदीश भाई व्यास पिछले जन्म में थे, ऐसा कुछ आपके लिए कहा है क्या? That was your last question. Okay, sister, thank you. So the question is about Jagdish Pai, who has contributed so many different things in the literature department, so many books, so much written. So do you have anything, and Baba has referred to Jagdish Pai as Vyas, the one who wrote all the scriptures. So has Baba referred to you in any such way, or do you have anything to say about Jagdish Pai's contribution to the Murli department? जगदीश भाई के लिए बाबा कहते थे, इस बच्चे की बुद्धि है 7 फुट लंबी. उसकी बुद्धि ऐसी थी, मैं आपको अनुभव बताऊं. कैसे शुरुआत हुई तो बात बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जब वो मधुबन में रहते थे तो उनको जो बुक लिखनी होती थी, कोई भी बुक छपनी है तो हम लोगों को बुलाते थे, डिक्टेट करते थे, और डिक्टेट कोई पढ़ करके नहीं करते थे. माना पूरी किताब जैसे उनके अंदर थी, किस पेज पर शास्त्रों में कौन सी बात लिखी हुई है वो पेज नंबर भी लिखा देते थे बिना पढ़े हुए. और मान लो लिखाते लिखाते मेरे को 15 लाइन 15 पेज 20 पेज लिखा दिया, उसके बाद वो रुक गए, कोई दूसरा मिलने वाला आया, उससे मिले, उसको टोली खिलाई, उससे बात किया, फिर ये नहीं पूछते थे क्या लिखाया, जहां स्टॉप करते थे वहीं से शुरू कर देते थे. उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी. जो बाबा कहते हैं ना, शास्त्रों में गायन है संजय, युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया जा रहा है और संजय देख करके धृतराष्ट्र को बता रहा है, तो बाबा कहते हैं मेरा बच्चा संजय है. शिव बाबा ने ज्ञान दिया और इसने कैच करके दुनिया के आगे रख दिया. So he's sharing his experience about Jagdish Pai. Baba himself used to say that this child has an intellect 7 feet long. So he had a very, very subtle and very catching intellect. And so he's sharing his experience of how Jagdish Pai used to write books, and he used to come to Madhuban, and he used to, he didn't write the books as such on his own hand, but he used to dictate to someone else who would write it. And even dictation, he didn't read it from somewhere, but from his own churning, from his own memory, he would speak the whole book, and he would continue for pages together. And then maybe somebody comes to meet him for a few minutes, he has to stop, he would go away, and he would come back, and he would start it from exactly where he left off, not even ask where did I leave off or anything. So he had a very, very unique intellect, very sharp intellect, subtle intellect. And this is why Baba gave him the title Sanjay, that here he is on the battlefield, he is seeing what's happening, and he's presenting it to the whole rest of the world in a way that they can make sense. उन्होंने मुरली में कोई हमें करेक्शन या एडिशन नहीं कराई. जो बाबा की मुरली है, उनका बहुत बाबा की मुरली से प्यार था. पहले सवेरे सवेरे खुद पढ़ते थे, चिंतन करते थे, फिर कोई किताब लिखते थे. तो बाबा की जैसे राइट हैंड कहें, एक बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला कहें, तो बाबा ने उनको अपना राइट इंस्ट्रूमेंट बनाया था बचपन शुरू से ही. So in terms of Baba's Murli, he would never correct or add anything to Baba's Murli, but he himself would make it a point to study the Murli every morning, and then he would think of what to write.
So this was his unique gift. और मैं जगदीश भाई की तरह साकार बाबा के सामने तो आया नहीं, मैंने अव्यक्त बाबा के साथ पार्ट बजाया। 73-74 से मैंने लिखना शुरू किया बाबा के साथ। तो बाबा मुझे सिर्फ एक वरदान बार बार देते थे, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान है और ये बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है। बस इतना वरदान मुझे बाबा के अव्यक्त पार्ट में 2-3 बार मिला। So Jagdish Bhai, of course, had come in front of Sakar Baba and received blessings from Sakar Baba, and I have only come after Avyakt Bab Dada, and so Baba would give me the blessing of divine intellect, that you have the blessing of divine intellect, and based on this you can do whatever you wish to do. And Raju Bhai, you did receive, when you were a little boy, letters from Sakar Baba though. Yes. Yes. बाबा ने साकार के समय मैं जब लौकिक में पढ़ाई करता था तो हर 15 दिन में बाबा मुझे एक पत्र जरूर लिखते थे। पिताजी को लिखते थे, उसमें मेरा नाम होता था कि राजेंद्र प्रसाद बच्चे को खास याद देना। बाबा की नज़र में था। बाकी साकार के समय कुछ बंधन थे, परिवार में इकलौता बेटा था, इसलिए हमारे दादाजी जो पिताजी के बड़े भाई थे वो एंटी थे, वो चाहते थे कि ये कभी ज्ञान में न चले, इसलिए उन्होंने मुझे साकार के समय आने नहीं दिया। और जब मैं आया तो कई बंधन आए, बहुत सारी बातें आई, उनकी विस्तार बहुत है। उसके बीच में माँ भी चली गई, शरीर छोड़ा उसके कारण, और उसके बाद पिताजी चाचा जी सब समर्पित हो गए। So I think you all heard the stories, a few days, yesterday or day before, about how Raju Bhai has received many letters from Sakar Baba in the early days, from these early days of 4 years old. He would write to the whole family, and in that family letter to the father, he would always mention my name, Rajendra Prasad. Please give him my utmost love. So I've received many blessings like that. Because of bondages in the family, I couldn't, of course, come to meet Baba in Sakar days, but I did receive his blessings in that subtle form. You are so lucky. I think we'll do one last one. Oh, two last, because you had your hand up for a bit. So, Vandana, do you speak Hindi? Hanji. Okay. So the एक दो question Zoom से भी हैं, हम वो भी I'll take 1 or 2 questions which are on Zoom also. Yeah. One question. What about my question? Part 2. Thank you. Okay. So हमारा question पहले हमने जैसे आपने कहा कि आप 2-3 महीने का सारा प्रबंध करके आए, मुरली जाना है, क्या करना है, ये सब पब्लिश करना है। और जैसे हमने कल भी सुना मुरली को, और उसमें साइलेंस का वरदान था और हमारा साइलेंस रिट्रीट हो रहा था। तो ऐसा हम सब का बहुत ही अनुभव है कि जैसे मुरली में बहुत बार ऐसी बातें आती हैं, हर हफ्ते, हर रोज़, जैसे कि हम सब जब इकट्ठी चीज़ें कर रहे होती हैं, यहाँ पीस विलेज में भी एकदम जुड़ जाता है, जो भी वहाँ मुरली में लिखा है वो भी हो रहा होता है। तो हम बहुत क्या कहें, आश्चर्य हो जाता है हमें। तो हम पूछना चाहते थे कि आपको, जैसे आपने सुना कि आपको दिव्य बुद्धि का वरदान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप कैसे ये सब इतना दूर का आप कैसे चुन सकते हैं सब मुरलियाँ? मैंने पहले ही कहा। One. So the question is that, you told us yesterday that you have prepared the murlis for 2-3 months ahead until you are away from, Madhuban. And many times we have noticed that what comes in the murli is matching with whatever is happening in the moment. Everyone must have realized or experienced that, whether in Peace Village or anywhere else we are. So how is it possible that, and of course you have received the blessing of divine intellect, but can you share with us how it is possible through that divine intellect for
such accuracy, in what happens and in what Baba is saying in the Murli on that particular day. मैंने पहले जवाब दिया कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पता है कब क्या डालना है, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ. मुझे एक स्लोगन सदा याद रहता है, बच्चे तो सोचने का काम भी मुझे दे दे, मैं क्यों सोचूं किसको क्या देना है. तो उसके बच्चे हैं, मैं सिर्फ उंगली चलाता हूँ. कौन सा वरदान किस तारीख को डालना है मैं चेक नहीं करता. बाबा डलवाता है और मैं बाबा की याद में रहता हूँ, उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ध्यान रखता हूँ बस. तो बाबा को जो देना है बच्चों को देता है, मैं उसमें बीच में दलाल नहीं हूँ जो मैं खाऊं, उसका काम है वो जाने. So what my thoughts are, these are Baba's children and Baba is to give his knowledge to his children. I am not the one to come in between and take away anything from the children. So all my job is to stay in remembrance of Baba, that his children should get from him what they need. And so I've already answered that question, that I don't think on what day, what blessing, no. Thank you. Okay, before you do the Zoom, could we just have this brother's question and then hold the Zoom? We'll come back because the Zoom wallahs do deserve one question at least. So brother, is your question short? Okay, good. ओम शांति. छोटा कर लिया है क्वेश्चन, हाँ आंसर भी ढूंढ लिया है. पहला क्वेश्चन तो यही था कि इस आत्मा को अभी पक्के से लगे हुए 2 साल हुए हैं. तो पहला क्वेश्चन जैसे ही पता चला राजू भाई आ रहे हैं कि उनसे यही पूछेंगे कि मुरली इतनी कड़क क्यों है, तो उसका आंसर मिल गया धोबी और गधे वाली उससे कि हाँ जी, तो वो तो खत्म हो गया. बट ये है कि आपके अनुभव से क्या लगता है कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, क्योंकि अभी क्या कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है जिस स्टेज पे हैं, तो कुछ स्टेजेस हैं आप. अभी ऐसा है कि yes, the first question I had was already answered because I had question about why Baba is so harsh in the Murli. He uses harsh words and I got my answer. और दूसरा कौन सा प्रश्न था? कि नए जो साकार. Okay, yeah. So this soul, like for new souls who have entered, for the souls who have entered into this this spiritualism under Baba's Gyan, like what is the stages which comes, because Avyak Murli is one. First it takes time to understand the Sakar Murli and then suddenly the Avyak Murli comes. So if there are any stages for this or any experience he can share. मैं सभी को एक राय देना चाहता हूँ. अगर ज्ञान में प्रवीण बनना है, नंबर 1 बनना है, तो साकार बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनो, पढ़ो. 2 साल के बच्चे को तो बार बार साकार मुरली को पढ़ना चाहिए. हमारी जानकी दादी ने इतने साल वही मुरली पढ़ी, कभी नहीं कहा कि रिपीट मुरली है. जब भी जाओ, राजू तू आज ये मुरली कहाँ से निकाल के ले आया, ये तो मैंने पहली बार सुनी है. मैं कहता दादी 5 साल के बाद ही रिपीट किया है, वही मुरली. नहीं ये आज ही समझ में मुझे आई. कहने का भाव है कभी कभी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती है, एकाग्र होती है, तो उस बात को कैच कर लेती है. तो ज्ञान को अगर यथार्थ समझना है तो साकार मुरलियों की अच्छी स्टडी करो. बाकी जब धारणाओं की और ऊंची स्टेज बनाने की बात आती, फरिश्ता बनना है, डबल लाइट बनना है, बीज रूप स्थिति बनानी है, तो उसके लिए अव्यक्त मुरलियां है. उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी है. पहले साकार से पक्के हो जाओ, फिर अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करो, तो संपूर्णता के समीप आ सकते हो. So I would like to give one advice, especially to those who are coming new. For example, if you're just 2 years old in Gyan or whatever, but pay as much attention as possible to studying the Sakar Murlis as much as possible. I've seen Dadi Janki, had experience with her. Many times she would call me and say, where did you get this Murli from? I've never heard this Murli until recently.
And I would tell her, but it's the same Murli Dadi that has been repeated every 5 years. No. I am reading it for first time. I am understanding this for the first time. So if you really want to become clever and deep in knowledge, just study the Murli, because for this you need a specific stage of the intellect, and you can understand up to a certain point, but then you also need to understand more. So yes, of course, Avyakt Murli is also good to refine your efforts, but you need a lot of strength to do that. But important for beginners is study the Sakar Murli foundation. Okay, so one last, right, we're now going to end. Are you agreeing with me? You come to okay. I think the Zoom questions have already been asked. Just hold it. Wait a minute. I think we are at 12:30 now, and I'm not sure whether we should go on or we do a part 2 to this. This is only Murli. This is why they put me here. No, nothing else but Murli, but they're all connected, right? Yeah. So, okay. Ask the Zoom question, and then Kalaben will tell us what to do. And I have a final parting question for this session, but Kalaben will do the part 2. So I just got the message that lunch is at 1. Is that correct, Kalaben? I want to be sure there is enough help to set the lunch up for those who were supposed to help with lunch. If you could please do that, because otherwise lunch will not be ready at 1. Okay. So I was saying the questions from the Zoom kind of are similar, so I don't know if this needed, and they were asked yesterday. So first question, or 2 questions are there. What is the timeline of Sakar Murlis? When did they start getting recorded? And the second, which is also similar to what we have just seen, is, but I'll repeat it. Why are the Sakar Murlis repetitive and preachy, whereas the Avyakt Murli seems more practical? टाइमिंग की बात है कि कब से कब की साकार मुरलियाँ चल रही है, और दूसरा कि रिपीट क्यों होती है कई बातें साकार मुरलियों में, और अव्यक्त मुरलियों के ज़्यादा सुनने को अच्छा लगता है. साकार मुरलियाँ बाबा ने बहुत धीरे धीरे ज्ञान को स्पष्ट किया, एक साथ नहीं किया. आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, परमधाम का यथार्थ परिचय, 3 लोकों का ज्ञान, ये सब धीरे धीरे स्पष्ट किया है, कराची से नहीं किया. So in Sakar Murlis, Baba has clarified the Gyan very slowly and progressively, the different aspects of the soul, different aspects of the supreme region, different aspects of the subtle region, the 3 worlds. So not all together, but he took time to clarify everything. और जब बिल्कुल रिफाइन बातें हुई तो 62-63 हो गया था. And it wasn't until 62 or 63 that all these things were in a very refined form. उसके बाद 68 पूरा 69 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हो गए. And we know that Baba became Avyakt in 69. तो बाबा की जो रिफाइन मुरलियाँ, जिसको बाबा ने कहा इनको संभाल के रखना, पहले वाला तो जलवा दिया बाबा ने, रखने नहीं दिया कि पुराना ज्ञान है उसको खत्म कर दो. लेकिन जब से रखा गया, रिकॉर्ड किया गया, कुछ टेप मशीन बाद में आई, 63-64 में टेप मशीन आई, उसमें रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन बहनें अपने हाथ से नोट्स लेती थी. तो साकार मुरलियाँ नोट्स से बनी है, इसलिए कभी कभी जंप भी लगता है. ये केवल 5 साल की रिफाइंड मुरलियाँ हमारे पास हैं, और अभी तो कंप्यूटराइज है, सब कंप्यूटर में है. उसके पहले की मुरलियों में भी कोई कोई बातें हैं
जो ब्राह्मणों की उन्नति के लिए हैं, लगता है कि रिपीट होंगी तो अच्छा है, तो मुझे अगर हाथ में आती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, तो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अधिकतर 5 साल की मुरलियाँ रिपीट होती हैं साकार की। अव्यक्त मुरलियाँ अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि अव्यक्त मुरली बाबा ने एक ही टॉपिक पर सुनाई है। साकार बाबा की मुरली में 4 टॉपिक और भक्ति के अनुभव हैं और बच्चों के उस समय के प्रश्न हैं, जो उस समय की परिस्थितियां हैं उसके आधार से बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। तो इसके कारण कई ब्राह्मणों को अभी के हिसाब से विदेश की कल्चर और भारत की कल्चर में भी, हमारी कल्चर तो ब्राह्मण कल्चर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आता है कि बाबा ने भक्ति काल को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। ब्रह्मा ने गंगा के बारे में, गीता के बारे में, राम, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश, सब के बारे में बाबा के पास जितना अनुभव है, वो सब अनुभव भक्ति काल का भी बाबा वर्णन करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि वो उसे हमारा क्या लेना देना, लेना देना नहीं, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि गिरावट का कारण क्या बना है, कैसे कैसे अंधश्रद्धा फैली है, तो समझ लेना कोई गलत नहीं है। इसलिए साकार बाबा की मुरलियों को पढ़ने से पूरी आत्मा नॉलेजफुल बनती है। और बाकी अव्यक्त बाबा की मुरली अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि वो एक टॉपिक पर है और उस टॉपिक के अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप या ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल बनना है तो आपको साकार मुरली पढ़नी चाहिए। So Sakar Murlis have been spoken by Baba, and it was not in a refined way in the beginning until 62, 63, and so until after that, whatever Murlis came, then Baba himself said to get rid of the older Murlis, that was old Gyan. So many of those Murlis have been destroyed. So only after 62, 63, the recording took place. Sisters who had taken notes from Baba's Murli, that we find some of those things. So the last 5 years of Murlis are the ones that are being repeated, that have been recorded properly. And plus, if I get any notes from anyone, older notes of older Murlis, which I find are useful for our effort, I also try to include them, incorporate them sometime in the Murli pack. So that's what happens. But in the Sakar Murlis, Baba is speaking about each topic, of course. And Baba had a very rich experience and background of bhakti, so you will find a lot of Baba's own experience of bhakti. And what was the main reason for us coming down the ladder? So most of the points about bhakti that Baba explains is to tell us how we came down doing all of those things. And so that is very important for us to know, not that we have, and to ask, what do I have to do with those Murlis? But it's good to understand why we came down as souls on our journey. In Avyakta Murli, you get specific topics. Baba takes up one topic and develops that. And we want to understand, we want to make effort based on that, and therefore we all like it a lot. But these both Murlis have their own significance, especially Sakar. Okay, so we have 10 more minutes. And remember, so that Raju Bhai could understand it directly from you, if you know Hindi, you speak to him in Hindi and Kalaban will translate. ओम शांति। रोज की मुरली, साकार मुरली में जो वरदान और स्लोगन होते हैं, वो क्या ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली से थे या बाबा आपके थ्रू माध्यम बन के आप डिसाइड करते हैं? So especially the blessing of the day and the slogan, where are they coming from? Are they coming from Sakar Murlis, or are they coming through you? Baba is using you to give those blessings. What are those blessings and slogans all about? साकार बाबा की जो मुरली चलती थी, गीत बजता था, बाबा ओम शांति कह के मुरली शुरू करते थे और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वो भी गेट पर खड़े होके करते थे। मुरली इतनी है, लेकिन जब रिपीट हुई, रिवाइज होने लगी,
तो बाबा के सेंटर्स बढ़ रहे थे और बहनें छोटी छोटी बच्चियां सुनाती, ऐसे लगता जैसे कोई सत्संग हो रहा, कथा की तरह सुना दिया। तो दादी ने कहा स्टूडेंट लाइफ में कुछ चिट चैट भी होनी चाहिए, तो प्रश्न लिखो, साल लिखो, धारणा की बातें लिखो। तो दादी जी ऐड कराती गई मेरे से, लेकिन वरदान और स्लोगन जो है वो अव्यक्त मूल्यों से। So Baba, when he spoke the Murli, the song used to play before, and then he used to start the Murli with Om Shanti, and then end the Murli, of course, with Mithe Mithe Sikhila Deva Choprati, right? So that was the end of the Murli, and even that he used to give love and remembrances after he had left the Gadi and gone to the door. Now, when this was happening, this was in the beginning days, in Sakar days. But then when the center started to expand, many sisters, young sisters, used to read the Murli and just say, this is the Murli. And then Dadiji in those days used to feel that because this is Baba's school, Baba's study, so there should also be a little chit-chat of some kind based on the Murli, not just read the Murli as is and finished. So she used to engage me in creating these questions and answers in Dadiji's days. And the blessings and the slogan come from Avyakt Bapdada's Murlis, Avyakt Murlis. मेरा कीर्तन केवल एक लाइन है, वरदान में जो ब्लेसिंग की पहली लाइन भाव वाली वो मैं बनाता हूँ, बाकी सब बाबा के ही महावाक्य हैं। So almost the entire blessing is from Baba's words, spoken Murli versions, and I only add this one word, which in Hindi is bhava, means may you be, right? May you be, that word I add. But all the other rest of the words are directly from Bapdada. Okay. Hindi. It's on. हिंदी में बात करती हूँ, लेकिन पूरी तरह अच्छी नहीं लगती है. सो डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप जो एक्सपीरियंस शेयर किया था ब्रह्म बाबा के बारे में, सो आपने बताया श्रीमत कहती है, शिव बाबा कहते हैं मैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आई हूँ, और जो बच्चे ब्रह्म बाबा के पास आते हैं क्वेश्चन लेके, ऐसे बिजनेस वाले और हाउस होल्ड वाले आते हैं, सो शिव बाबा कहते हैं ब्रह्म बाबा को पूछो, ऐसे कहते हैं. सो और आप अभी ये भी बताया कि जो बच्चे शादी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सिचुएशन ऐसा है, सो ब्रह्म बाबा बच्चे आपकी मर्जी, ऐसे ही वोंट से एनीथिंग लाइक ओके शादी बर्बादी है, लेकिन ये कहते हैं आपकी मर्जी. सो अभी ब्रह्म बाबा नहीं है हमारे पास, सो कोई सिचुएशन आते तो श्रीमत की वजह से क्या करना है, और आप ये भी बताया है क्वेश्चन पूछने से उनमें ताकत नहीं है वो उसको फॉलो करने का. सो हमारे पास भी सो मेनी सिचुएशंस आते हैं और ब्रह्म बाबा नहीं है हमारे पास, तो हम तो सीनियर्स तो पूछते हैं. सो इसकी वजह से हमारे अंदर ताकत नहीं है. इट्स लाइक हाउ टू फॉलो द डायरेक्शंस, हाउ टू फॉलो श्रीमत. वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सपोर्ट. सो दैट्स द रीजन वी मे अप्रोच सीनियर्स. इज इट समथिंग वीकनेस? समझा? In English, but is that connected to the Murlis, or that could be taken up later? अभी उत्तर दिया ना, उससे connected है. Say it in English, Kala. Just essence. So this is related could you to pass the mic to the point about Shiv Baba giving Srimat and Brahma Baba giving directions based on his experience, especially something to do with marriage or any Lokik situation. Now we don't have one Brahma Baba with us. So how do we get our directions from? Yes, of course, we go to our seniors, but then you also said that you have to have the strength to follow through with the directions. So
how does that fit? How do we get that strength? How do we develop that strength to follow through? Even though it is some instrument that's giving on behalf of Baba, but how do we get the strength to follow through? इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो श्रीमत सबके लिए एक जैसी है, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे कोई भी है। श्रीमत माना श्रीमत, उसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते इसमें बाबा ने ढील दे दी है, हमको नहीं दिया है, आपको दिया है। कारण समझने का अंतर हो सकता है, और कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बाबा ने छूट दी है। जैसे बाबा से अगर कोई भोजन के विषय में पूछने आता है, कोई को बाबा कह देगा बच्चे बिल्कुल तुमको बाहर नहीं खाना है, किसी के हाथ का नहीं खाना, कुछ भी नहीं लेना है। और कोई को कहता है बच्चे खाना पड़ता है, कोई हर्जा नहीं, बाबा को याद करके दृष्टि देके खा लो। दो प्रकार के बच्चे आते हैं बाबा के सामने। एक हैं जिनके आगे कोई बंधन है, जो मिलिट्री में जैसे है, कोई बॉर्डर पर खड़ा है, अब उसको बाबा कहेगा नहीं तुमको नहीं खाना है, तो बेचारा मरेगा, क्या करेगा? उसको तो बाबा कहेगा ना तुम दृष्टि दो, प्यार से बाबा को याद करो, खा लो। लेकिन आप प्रवृत्ति में हैं, आप अपने हाथ से बना सकते हैं, तो आपको कहेगा आप क्यों खाएंगे बाहर, बिल्कुल नहीं खाना। तो हर एक समझ से चलना है। बाबा की श्रीमत को भी समझ करके परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना। प्योरिटी की बात में सबके लिए जैसे है, बाकी और जो बातें हैं उसमें उनकी परिस्थितियां देख करके बाबा ने मत दी है। अगर मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको शादी करानी पड़ती कोई कारण से, बाबा ने भी कराई है ना शादी, ब्रह्मा बाबा ने कितनों की शादी कराई, खुद क्यों कराई? उनकी बच्चियां मार खा रही हैं या बेटे को बहुत सताया जा रहा है, कोई कारण बना है, तो बाबा उसको शक्ति दे करके उसकी शादी करवाई है, बाबा ने खुद करवाई। जैसे आपने सुना होगा सुंदरी लक्ष्मण भाई, बड़ौदा में एक जयंत भाई डॉक्टर, चंपा बहन है, हजारों सैकड़ों ऐसे युगल हैं जो शादी बाबा ने खुद कराई। So Baba actually gives the same Srimat for everyone. It's not that it's different for different people, those who are surrendered, those who are in householders and all. But then there are two situations. One is those who can follow completely, and there are some who have some kind of bondage or the other. So when Baba knows about the bondage that soul is in, then he will give also directions according to that. But he will also give power according to that. He will also give power to follow through with his directions. And Rajubai is sharing many instances in which Brahma Baba himself got two souls married, because they were going through a lot of difficulties in their family or a lot of pressure from the family on both sides. So it wasn't that Baba changed, anything in terms of the general Srimat. The purity Srimat is always the same. But then Baba would give special strength, courage to the souls and, get them married for Lokik reasons, so to speak. So there were different situations that Baba would, try to understand and accordingly give direction to. बाकी कोई अपनी कमजोरी के कारण चाहता है, बाबा से पूछने आता है, तो बाबा कहता तुम्हारी मर्जी. So it's not that because of your own weakness you come and tell Baba, that I want to whatever, then Baba will say, okay, do it according whatever is in your wish. It wouldn't be Srimat then. It would be just you do whatever you want to do on your own. So same thing with food habits too. When somebody is in a very helpless situation, he's on the front lines, there is nothing available for him to, he's not going to tell him to follow in such a way that he has to starve, right? So he will always give direction according to that. Yes, you can remember Baba and you can eat in this way. So Baba also understands, even though it is Srimat, it is, about purity, but Baba was very understanding of children's intentions and also the situations that they are in. Okay,
Could you, and I know you only speak English, so ask your question in English. Om Shanti. First, I'd like to thank Rajabai for such a wonderful connection that he provided with our ancestor souls. And I only met Daddy Janki and of course Daddy Guzar, and that was it. So this is really special for me. Now, my question is, speaking as a double foreigner, right, and being in Guyana for many years, and there are certain practices that I wonder maybe it's more cultural than Shri. I mean, it's part of Shrimat, but it's very, very Indian that I'm beginning to think, oh, maybe that's the cultural influence in Brahma Baba. Maybe, and then I mean, through the years, I've accepted it because, you know, the love and faith in Baba. But now I think maybe this is the right time to ask certain practices. Is it cultural or, you know, because I don't know, you've experienced it. Yeah. So like a specific cultural question. This happened in the Philippines. Oh, okay. पहले तो आपने पूर्वज आत्माओं के साथ हमको इतना अच्छा कनेक्ट किया है इस वीकेंड में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ। और मेरा कई दिनों से डबल फॉरेनर के रूप में होने के नाते एक क्वेश्चन रहा है कि हम कहते तो हैं बाबा की श्रीमत है, ये है, लेकिन शायद ये भी क्वेश्चन अंदर से चलता है कि शायद ये वहाँ के कल्चर के हिसाब से ये कर रहे हैं, जैसे इंडियन की कल्चर, भारत के कल्चर ये है इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न अभी भी उठता है कभी कभी श्रीमत के बारे में या कई बातों के बारे में, तो अभी उसको कैसे हम समझ सकें कि ये कल्चर का मिक्सअप है कि श्रीमत है कि कैसे। बहुत अच्छी बात है। और कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। या यू रेडी फॉर आंसर? Can I give a particular question, a specific situation? You want to give an example? Yes, this happened in the 1980s, and you know how you chop vegetables, and I don't know if this is appropriate, but you cannot chop vegetables, especially for women, right? If they have their period. So I don't know, I'm sorry if I have to add, but it has always been in my mind. Is that cultural or Baba? I mean, you said it's both, right? Om Shanti तो बहनों को कहते हैं अभी आप किचन में ये नहीं करना चाहिए, वो कल्चरल है कि वो बाबा की श्रीमत। ऐसा है कि ब्राह्मण जीवन में वास्तव में देश या विदेश हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब देवता घराने वाले हैं। भले हम ट्रांसफर हुए हैं विदेश में या आप अपने क्रिश्चियंस में या कोई भी धर्म में चले गए, लेकिन हैं तो आप ओरिजिनली डिटी देवता धर्म के। और देवता धर्म की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो कोई इंडिया के हिसाब से नहीं है। इंडियन ही है जो बाबा के बच्चे विदेश में गए हैं तो देवता ना, और देवता बनने के लिए पढ़ाई है। आपको अभी क्रिश्चियन बनने के लिए पढ़ाई हम नहीं पढ़ा रहे हैं, या हम कोई दूसरे धर्म के लिए पढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे विद्यालय की बाबा की पढ़ाई जो है वो एक डिटीज को, भारत भूमि केवल खंड छोटा नहीं है, सतयुग पूरा ही विश्व भारत है, और उस भारत में जो भी आएंगे जन्म लेंगे वो सब देवता होंगे। तो इस समय जो भी बाबा के बच्चे हैं उन सबको एक जैसी कल्चर फॉलो करनी है, क्योंकि वो सब देवता हैं और बनने वाले हैं। इसलिए जो भी हमारे नियम बने पवित्रता के, स्वच्छता के, भारत के अंदर ये बहुत मानते हैं। जब मासिक वगैरह का कोई बहनों का ऐसा आता है, कोई किचन में नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी शुद्धता की बात है। ये हमारे संस्कृति के अंदर है। मूल ब्राह्मण जीवन माना पवित्र जीवन, स्वच्छ जीवन, निर्मल जीवन, और वो बनाएंगे तो हम देवता बन सकेंगे। इसलिए विदेश की और देश की इसमें बात को हम मिक्स ना करें। ये हमारी ब्राह्मण कल्चर देवता कल्चर है, और हम देवता बनना है, इसलिए हमें नियम पालन करने हैं। So in fact, Brahmins means
the family, the clan that is becoming deities. And within the Brahmin clan, Brahmin culture, you cannot really differentiate Bharat and foreign lands or this land and that land. They cannot really divide them. We're all just one, belong to one, and we are becoming deities. And deity clan or deity culture means it's about purity. It's about cleanliness. And yes, of course, in Bharat we do have certain traditions relating to certain times of the month for the women not to enter the kitchen and so on and so forth. But it's really basically about cleanliness. It's about purity, things to do with purity of body, purity of soul, and so on. So not to think of it in terms of division of, that kind of culture, but it's about something to do with cleanliness and purity. So we will all be together in one land. There will not be foreign lands anywhere. It will be one world, all of us living together in the deity world. So this thinking we should not have within the Brahmin family. So in closing now, you do the slogans in the Murlis, right? So I want 2 slogans from you. Wait, and I'll tell him what. The first slogan is, what would Sakar Purusharthi Brahma Baba say to us? One slogan. And then, what would Avyakt Bapdada, Perfect Brahma, Angelic Brahma say to us? आप स्लोगन बनाते हो तो अभी हमारे लिए 2 स्लोगन आप दे सकते हैं. एक, साकार बाबा अगर यहाँ होता हमको देखते तो क्या स्लोगन, और अव्यक्त बाप दादा क्या स्लोगन देते, उनकी तरफ से आप 2 स्लोगन. साकार बाबा की तरफ से स्लोगन था, जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे. So from Sakar Baba, his slogan I'm remembering is, whatever I do, looking at me, everyone will follow. और अव्यक्त बाबा का स्लोगन है, जैसी हमारी वृत्तियां हैं वैसा वाइब्रेशन बनेगा. हमारे संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, इसलिए संकल्प और वृत्तियों को भी हमें शुद्ध और पवित्र बनाना है. जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल, वैसा वाइब्रेशन, वृत्ति को परिवर्तन करना. So an Avyakt Bapdada's slogan would be, as is the attitude, so will be the vibrations, and so also the atmosphere, because it's our thoughts that is creating the new world. So we have to work on our internal attitude to create that kind of vibration atmosphere. So thank you, Raju Bhai. That was Did you enjoy? And thank you, Gayatri Bhai.